Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mrs. Sumair Kanwal, Senior Subject Specialist Biology. Today our topic is from chapter number 26, Some Major Ecosystems. Let's see the content of today's lecture. Our first topic is coniferous, alpine and boreal forest. Second, we will discuss the grassland ecosystem, and then last, desert ecosystem. Coniferous, alpine and boreal forest. जी बेटा, इस पिक्चर में आपको कोनिफेरस अल्पाइन बोरियल फॉरेस्ट दिखाए गए हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले लोकेशंस कि पाकिस्तान में ये फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं। इन पाकिस्तान दीज फॉरेस्ट आर इन अपर कागान, देर, चल्लाज, मालम जब्बा इन सवात वैली। अगर हम इसकी लोकेशन वर्ल्ड में देखें तो इन वर्ल्ड दे स्ट्रेच अक्रॉस यूरेशिया। यूरेशिया में यूरोप एंड एशिया दोनों आ जाते हैं, एंड नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, जस्ट साउथ ऑफ द टुंड्रा। नॉर्दर्न कोनिफेरस फॉरेस्ट जो है इनको टैगा कहा जाता है। नॉर्दर्न कोनिफेरस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड टैगा। अब हम देखते हैं कि इसकी क्लाइमेट कैसी है टैगा की। कंडीशन इन टैगा आर हार्शर देन दोज इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उससे ज़्यादा इसकी जो कंडीशंस है वो हार्शर होती हैं। द विंटर्स आर लॉन्गर एंड कोल्डर एंड द ग्रोइंग सीजन शॉर्टर। इसमें सर्दियों का मौसम जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता है और कोल्डर सीजन होता है, एंड ग्रोइंग सीजन इज शॉर्टर। द फ्यू मंथ ऑफ वार्म वेदर आर टू शॉर्ट टू अलाउ द ट्रीज टू लग्जरियस ग्रोथ ऑफ रीग्रोइंग। इसमें ट्रीज की रीग्रोइंग के लिए बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है जिसको हम ग्रोइंग सीजन कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ग्रोइंग सीजन जो है वो शॉर्टर है और विंटर जो है लॉन्गर और कोल्डर्स है। एज अ रिजल्ट एवरग्रीन कोनिफेरस ट्रीज पॉपुलेट दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली विद स्मॉल वैक्सी नीडल्स। और इसमें जितने भी सदाबहार कोनिफेरस ट्रीज जो हैं वो पॉपुलेट होते हैं, इनमें स्मॉल वैक्सी नीडल लाइक लीफ होते हैं। The waxy coating and the small surface area of the needles reduce water loss by evaporating during cold months. Leaves remain on the trees year around. इसमें needle like leaf होते हैं ताकि इनमें मिनिमम इवेपोरेशन जो है वो हो सके, वाटर इवेपोरेशन कम हो, और वैक्सी कोटिंग जो है वो भी इवेपोरेशन से उसको सेफ रखती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट। कोनिफेरस फॉरेस्ट टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले अल्पाइन फॉरेस्ट है। कोनिफेरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई अल्टीट्यूड आर कॉल्ड अल्पाइन्स। अल्टीट्यूड हम किसी भी माउंटेन की मैक्सिमम हाइट को कहते हैं। सो द कोनिफेरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई अल्टीट्यूड आर कॉल्ड अल्पाइन फॉरेस्ट। सेकेंड टाइप इज बोरियल फॉरेस्ट। Coniferous forests located at high latitude are called boreals. अगर हम इक्वेटर्स को देखें तो इसमें जो पोल की तरफ जितनी ज़्यादा जो है वो हाइट होगी उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। सो द कोनिफेरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट द हाई एल्टीट्यूड्स आर कॉल्ड बोरियल फॉरेस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं स्नो कवर एंड टेम्परेचर। इन फॉरेस्ट के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि विंटर सीजन इसमें ज़्यादा है। There is a constant cover of snow characterized by the long severe winter, and temperature may be below freezing point up to the 10 degrees centigrade. Animal and plant life. अब हम देखते हैं कि इन फॉरेस्ट में किस किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। Because of its harsh climate, the diversity of life is much low. क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, कोल्ड विंटर्स होती हैं, इसलिए इसमें डाइवर्सिटी बहुत कम होती है और इसमें
Large animals such as small Kashmir flying squirrels, snowshoe hare, wolverines, crossbill are present. एंड प्लांट्स पाए जाते हैं वो ऑल जो हैं वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं लाइक पाइनस वेलिचियाना पाइनस रॉक्सबर्गाई एबीज पेंड्रो Cedrus sidera are present. And last is human impact. Due to the severity of climate and remoteness, most of the coniferous forests remain undisturbed. These forests are the major source of lumbers for constructions, so the forests are cleared for this purpose. अब हम देखते हैं नेक्स्ट इकोसिस्टम ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किसी इकोसिस्टम्स में ग्रासी अपीयरेंस जो है वो ज्यादा है। सबसे पहले हम इसमें भी देखेंगे कि लोकेशंस क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाकिस्तान में कहाँ पाए जाते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स आर फाउंड इन गिलगित, कश्मीर, वजीरिस्तान, लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कल्लात। और अगर हम इसकी लोकेशन वर्ल्ड में देखें, लोकेशन इन वर्ल्ड, you can see the large grassland in the center of Eurasian continent. Types of grassland. There are two types of grassland. Prairies. Grassland present in the temperate climate are also called the prairies. These grassland do not have the woody plants, so they are known as prairies. These are located in the North America, pampas of Argentina. Second type is savanna. The grassland with scattered woody trees are called savanna. The grassland in the tropical climate have the woody trees are called savanna. Now the rainfall in the grassland. The grassland usually face severe drought. Annual rainfall is about 250 to 750 millimeter. In tropical and subtropical grassland reaches about 15 millimeter. Thus the grassland occur in the region where mean annual rainfall is midway between a forest and a desert. Water and fire are the crucial factor in the competition between grasses and trees. Plant life in grassland ecosystem. Dominant species are gramineid. ग्रेमिनाइड जो है वो ग्रासेस की फैमिलीज को कहते हैं। इसमें मोस्टली ग्रासेस और ग्रास लाइक प्लांट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सर्टन फोर्ब्स सच एज कंपोजिटिस, फोर्ब्स जो हैं वो ग्रास लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं और इनमें जो फैमिलीज आ जाती हैं कंपोजिटिस, लेग्यूम्स एंड मैनी अदर हर्बेशियस प्लांट स्पीशीज आर एसोसिएटेड with grasses. Now next point is layering. What is layering? Layering is the characteristics of grassland. इसमें 3 different types की grass layers होती हैं. Number 1 tall grasses जिसमें एंड्रोपोगन, पेनिकम्स वगैरह आ जाते हैं. Number 2 mid high grasses. Mid high grasses के अंदर एग्जाम्पल स्टाइपा, स्पोरोबोलस और राइजोप्सिस आ जाते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स हैं ग्रासेस की. और शॉर्ट ग्रासेस, शॉर्ट लेयर, फॉर एग्जाम्पल पोआ, ब्रोमस, मोसेस, लाइकन्स एक्सेट्रा. अब हम देखते हैं कि सॉइल कंडीशंस क्या है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में. द सॉइल मॉइस्चर इज लिमिटेड on the account of low precipitation and high evaporations.
कि इसमें सॉइल मॉइस्चर जो है वो लिमिटेड होती है क्योंकि लो प्रेसिपिटेशन होती है, कम बारिश होती है एंड इवेपोरेशन ज़्यादा है। अपर सॉइल लेयर इन विच grasses are rooted is normally moist but deeply layer are constant dry। और इसमें जो रूट्स हैं जो तो डीपर लेयर में प्रेजेंट हैं वो ड्राई होती हैं और जो अपर लेयर में है वो नॉर्मली मॉइस्ट कंडीशन में प्रेजेंट। The soil of grassland is basically impermeable with excessive salinity. Now the animal life in grassland ecosystems. Dominant species are herbivorous invertebrates, including insects are very large amount. Grasshoppers can compete with other herbivores for plant foliage. Predators are reptiles, amphibians, mammals. For example, इसमें lizard, toad, turtles, prey on insects, foxes and wolves among mammals are very common. अगर हम डिकम्पोजर्स में देखें कि अमंग डिकम्पोजर्स मैनी बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर एक्टिनोमाइसेट्स, फंगस लाइक मोल्ड, yeast, mushrooms, bracket fungi are most common in the grassland ecosystem. And large animals like zebra, wild horses, bisons are important. Now the productivity in the grassland ecosystems. इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट टेम्परेट ग्रासलैंड और सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और एनुअल ग्रासलैंड के अंदर क्या प्रोडक्टिविटी है। The temperate grassland. The temperate grassland, the rate of primary production is about 700 to 1500 grams per meter square annually. Next is in annual grassland. Large grazing animals consume relatively small amount 5 to 10% of the total herbage produced. Subhumid tropical grassland. In subhumid tropical grassland is more than 4000 gram per meter square. Human impact. The natural grassland are inward, are used for the crop production and livestock management. Grazing has prominent effect on grassland. Overgrazing causing the reduction in herbage cover and result in soil erosions. ग्रेजिंग का भी ग्रासलैंड पे एक प्रोमिनेंट इफेक्ट है ओवरग्रेजिंग की वजह से। एक तो हर्बेज कवर जो है उसमें रिडक्शन होती है, सेकेंडली soil erosions. Many lands are converted into deserts by a process called desertification due to overgrazing. Now the next last is desert ecosystem. Location of desert ecosystem in Pakistan. पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स के डेजर्ट्स हैं जिसमें थल है, चोलिस्तान है और थर हैं। इन पाकिस्तान डेजर्ट इकोसिस्टम इन वेस्टर्न पंजाब जिसमें मियाँ वाली भक्कर आ जाते हैं वेयर इट इज नॉन एज थल। इन सदर्न पंजाब area like Khotabaz, Bahawalnagar, Yazman, Bahawalpur, Khanpur, Rahim Yar Khan also have the deserts. These are called Cholistan. And third is Thar. In Sindh, this desert ecosystem is called Thar. These biomes are found on various biomes are found on every continent, often around 20 to 30 north and south latitude. Desert includes a variety of environments. At one extreme are certain area of Sahara. अगर हम एक्सट्रीम एरियाज में देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सहारा वेयर इट इज वर्चुअली नेवर रेन और यहाँ ना बारिश होती है ना ही कोई वेजिटेशंस होती हैं।
There is no vegetation at all. Now the rainfall in desert ecosystem. Less than 25 to 50 centimeter or 10 to 20 inches or not at all. Plant life. The plants are often spaced evenly as if planted by hand frequently. The perennial plants are bushes or cacti with large shallow root systems. Evenly spaced mean होता है कि equally timing के साथ the plants are often spaced evenly if the planted hand frequently. Perennial plants जो हैं मोस्टली जो सदाबहार प्लांट इसके अंदर हैं वो बुशेस कांटेदार पौधे जिनमें लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती और इसमें शैलो रूट सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है. Plants are covered with the waterproof waxy coating to prevent evaporation of precious water. क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होती है, बारिश और वाटर बहुत कम होता है, इसलिए इसमें जो है वैक्सी कोटिंग लेयर होती है ताकि वाटर जो है जो प्रीशियस वाटर है इसकी इवेपोरेशंस कम से कम हो सके. वाटर इज स्टोर्ड इन थिक स्टेम ऑफ कैक्टाई एंड अदर सकुलेंट और इनमें जो प्लांट्स हैं उनकी स्टेम्स जो हैं वो जूसी होती हैं ताकि वाटर जो है वो इनके अंदर सेव रह सके. Desert plant conserve water in variety of ways. Cacti and euphorbia have fleshy stem in which water is stored for use during the period of drought. Desert plants के अंदर जैसे कैक्टाई और यूफोरबिया है इनकी स्टेम्स जो हैं वो फ्लैशी होती हैं और इनमें वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है ताकि ड्राउट कंडीशंस में जब पानी की कमी हो तो इसको यूटिलाइज किया जा सके. Animal life. Animals are also specially adapted to survive on little water. Most deserts appear to be almost completely devoid of animal life during day because the animal seek relief from sun and heat in cool underground burrows. In the dark when the desert cool down, जैसे ही desert cool down होता है, horned lizard, snake and other reptiles emerge to feed as do mammals such as kangaroo, rat, birds such as burrowing owl. Most of the small animals survive without ever drinking at all, getting all the water they need from their food and what produced during the cellular respiration in their tissues. Most of the small animals पानी के बगैर जो है वो survive ever drinking at all, getting all the water और ये पानी जो है अपने फूड से हासिल करते हैं और उसके अलावा जो रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो प्रोड्यूस होता है. Large animals such as desert, bighorn sheep, camels are dependent on the permanent water holes during the driest time of the year. Now, in the last is human impact. While human activities are reducing the extent of many biomes, they are causing the spread of desert. A process is called desertification. A dramatic example is occurring in the Sahel, which border the southern edge of the Sahara Desert in Africa. Now the recap of our lesson. आज के लेसन में हमने कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट को डिस्कस किया कि वो कहाँ पाए जाते हैं और उसमें सॉइल कंडीशन, क्लाइमेट क्या है और उसमें किस किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स को कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाकिस्तान और इन द वर्ल्ड उसकी लोकेशंस क्या है और इसमें किस किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, इसकी सॉइल कंडीशंस क्या है और ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है. और इसी तरह से हमने लास्ट में डेजर्ट इकोसिस्टम डिस्कस किया और इसमें हमने देखा कि इसमें हमारे पाकिस्तान में 3 टाइप्स के डेजर्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, थल, चोलिस्तान एंड थर. और इसमें किस किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं.
Now there is a home assignment for you. Here are some short questions. Question number 1 is what is difference between alpine and boreal forest? And question number 2 is what is meant by layering? Question number 3 is list some adaptations of desert plant and desert animal to heat and drought. Question number 4, where the Thar and Thal desert are located. And our last question is what is difference between prairies and savanna. Our topic is end. Thank you so much.